Good morning everyone. I Sheenam Kakkar from DAV Public School welcomes you in today's video session. Hope all of you fine at your homes and your family members also. So I am your teacher of class plus 1 and today we will learn concepts of physics. So our topic of today is conservation of linear momentum. As we have started the chapter laws of motion, that is our second chapter, and this is a very important topic, that is conservation of linear momentum. About linear momentum we have discussed earlier also. What we have done in the momentum, we know in universe everything is made up of matter. सारी चीजें किसकी बनी हुई हैं? मैटर की बनी हुई हैं. और मैटर में क्या है? मास है. इट इज सर्टेन कि सारी चीजें किसकी बनी है? मैटर. एवरीथिंग इज made up of matter, but it is not must that everything is in motion, but the thing which possesses matter and moving also in straight line direction, we can say it is possessing linear momentum. Suppose I am moving linearly in straight line direction, I will have momentum. Any object, if I am throwing it in the linear direction, it will also have the linear momentum. Why? Because it has mass also and it is moreover it is moving. That is why we call it has linear momentum. So main topic is conservation of linear momentum. What it means, the word conservation. Conservation means conserved, or I can say the form can be changed but the thing can never be created nor can be destroyed. For example, in standard 9th we have discussed about the law of conservation of energy. It states that energy can neither be created nor can be destroyed, only can be converted from one form to another form. For example, suppose I am in the position of rest, I am not moving. On position of rest I am. Which energy I have? I have potential energy. Suppose I'll start moving. If I will start moving, I'll possess kinetic energy. Again I will come on rest. Then again I will have potential energy. Then again furthermore I will start moving. Again I will have kinetic energy. What can we observe from that? We can conclude that energies are converting from one form to another form, but they are not getting created or not destroying. सो दैट इज़ द कंजर्वेशन. किसी चीज़ का कंजर्व रह जाना, उसकी फॉर्म या स्टेट चेंज हो जानी, बट ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. दैट वाज द स्टेटमेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. Now we are having this thing, conservation of linear momentum. To make it more easy, we are having this diagram from which you will understand very easily. Suppose I have two balls, that ball A and that is the ball B. That ball possesses mass m1, that ball possesses mass m2. I just considered that this ball is moving somewhat with greater velocity than the ball B. As they are on their initial state, so I have given this ball u1 velocity, this ball u2 velocity. That are its initial velocity. ये बॉल विद डायरेक्शन में जा रही है एंड दैट बॉल इज ऑल्सो गोइंग इन दैट डायरेक्शन. अर्लियर आई टोल्ड यू कि मैंने कंसीडर किया है इस बॉल की वेलोसिटी थोड़ी सी ग्रेटर है एज कंपेयर टू द बॉल बी. सो एज द बॉल्स आर मूविंग, अब ये बॉल्स दोनों मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी, द टाइम विल कम व्हेन दिस बॉल विल गेट कोलाइडेड विद बॉल बी. अब ये दोनों बॉल्स कोलाइड करके इसकी वेलोसिटी मैंने ज्यादा कंसीडर की है, u1 इज ग्रेटर दैन u2 समवट. अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा ग्रेटर है तो ऑब्वियस सी बात है दैट बॉल विल गेट कोलाइडेड विद बॉल बी एंड एक्सर्ट मोर फोर्स. ये वाली बॉल इस पे फोर्स लगाएगी और ये वाली बॉल इस पे. कोई चीजें टकरा रही है, सपोज दीज आर, पहले ऐसी डायरेक्शन में जा रही है, अब ये टकराएंगी, जब ये टकराएंगी कोलाइड करेंगी, ये इसको इधर वाली पे डायरेक्शन फोर्स लगेगा एंड दैट विल एक्सर्ट फोर्स ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी. जो ये बॉल बी पे लगाएगी वो फोर्स हो जाएगी हमारी एफ ए. ए लगा रही है कि कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? बी. इस केस में बी फोर्स लगा रही है, हु इज एक्सपीरियंसिंग? द बॉल ए. सो दैट इज द ड्यूरिंग कोलिजन एंड दैट इज द बिफोर कोलिजन. अब दोनों ने एक दूसरे पे फोर्स लगा दी, इसने ज्यादा लगाई, इसके ज्यादा लगने की वजह से दोनों बॉल्स के डायरेक्शन ये वाली होगी, ए बॉल बी से डायरेक्शन में और बी बॉल. बट ये इनकी इनिशियल वेलोसिटी थी,
बिफोर कोलिजन एंड दैट इज द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। ये हमारा केस आ जाएगा आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन के बाद ए बॉल की वेलोसिटी हो जाएगी v1 एंड b विल गेट वेलोसिटी v2। अंडरस्टूड टिल हियर? You just note down side by side on your notebook, so afterwards when you will revise it, your concepts can be more clear. Okay, now we will derive expression for the conservation of linear momentum. What we have, we will derive for the before collision, as we have discussed that linear momentum is equal to mass and velocity. In the previous session, video session, I told you this thing, that a linear momentum is equal to mass and velocity. So firstly we will derive the expression for the before collision. Before collision, if I want to find the linear momentum of ball A, as it has mass also, moreover it is moving, so linear momentum will be mass into velocity. But we are talking about ball A, so if we are talking about ball A, the linear momentum is equal to m1 into u1. That is, mass of ball A is m1 and velocity of ball A is u1. So it is m1 into u1. Afterwards, the linear momentum of ball B, if I am talking about the linear momentum of ball B, it will come m2 into u2. Why? Because the mass of ball B is m2 and velocity of ball B is u2. That is the case for before collision. Now come to the next case, that is after collision. That is before and after collision. जब ये दोनों बॉल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करी तो इन दोनों बॉल्स की वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी. देयर वेलोसिटी इज चेंज नाउ. सो लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉल ए, जस्ट remind this thing that we are doing this for after collision. Remember this thing, we are doing this for after collision. And after collision, the momentum of ball A is m1 v1. The momentum is the product of mass and velocity, and we are doing for after collision, so that is m1 into v1. And for ball B, the product is m2 into v2. Clear till here? Now we have done linear momentum before collision and for after collision. Now this case is left during collision. For during collision, what we will do, according to Newton's second law of motion, that thing we have done in standard 9, that in Newton's second law of motion, force is directly proportional. अब किसी चीज़ का मोमेंटम चेंज करना है मुझे, सपोज मैं स्कूटी चला रही हूँ, अगर मुझे इसका मोमेंटम चेंज करना है तो क्या करूँगी? स्पीड इंक्रीज करूँगी, मतलब फोर्स लगाऊंगी. आई विल अप्लाई एक्स्ट्रा फोर्स ऑन दैट सो दैट इट्स वेलोसिटी कैन बी चेंज. इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए? चेंज. बट वेलोसिटी चेंज होगी, मेरी स्कूटी नहीं चेंज हो जाएगी. क्या चेंज होगा? वेलोसिटी चेंज होगी, बट स्कूटी विल नॉट गेट चेंज. स्कूटी तो वही रहेगी जो मैं चला रही हूँ, मेरी स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है. So mass will remain constant, but velocity is getting changed, and change in velocity with respect to time multiplied by m is called the force. According to Newton's second, force is directly proportional to change in linear momentum divided by time. Hope this thing is clear to you. Very important to understand. Again I am repeating. Force is directly proportional to change in linear momentum. अब इस इन बॉल्स में क्या आ रहा है? पहले बॉल एक v1 वेलोसिटी से जा रही थी, ये v2 से जा रही थी. When they were collided with each other, इनकी वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी, बट मास क्या रहा? सेम. इसका m1 था, इसका m1 ही रहा, इसका m2 था, इसका m2 ही रहा. मास इज नॉट चेंज. So we will derive for balls A and B the momentum, that is second law. Now FAB, जब A ने B पे फोर्स लगाई तो A की खुद की वेलोसिटी भी चेंज होगी. इट इज वेरी ऑब्वियस. अगर A B पे फोर्स लगा रही है, A की खुद की वेलोसिटी भी चेंज होगी. तो चेंज में हम क्या लेते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल मतलब आफ्टर कोलिजन हमारी वेलोसिटी कितनी है? m1 v1 A बॉल के लिए, और इनिशियल कितनी थी A बॉल के लिए? m1 v2. दैट इज फॉर FAB. Force exerted by A on B is equal to change in linear momentum of ball A divided by time. फिर force exerted by B on A is equal to change of linear momentum of ball B divided by time. अब B का मोमेंटम कैसे चेंज हुआ? फर्स्टली उसका था m2u2, कोलिजन के बाद कितना हो गया? m2v2. मतलब व्हाट वी हैव टू डू? फाइनल माइनस इनिशियल. m2v2 फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल B,
m2 u2 initial momentum of ball we have subtracted divided by time, that is according to Newton's second. Afterwards what we have to do, we have to use according to Newton's third law also we have to do. According to third law, with every action there is equal and opposite reaction. I am giving you example. When we are pressing the trigger of gun, जब हम गन का ट्रिगर प्रेस करते हैं, ट्रिगर ऑफ गन इज प्रेस टुवर्ड्स आवर, वो हमारी तरफ प्रेस होता है और बुलेट कहाँ से निकलते हैं, बाहर वाली साइड से. हमने फोर्स यहाँ पे दी और बुलेट रिलीज हुआ फ्रॉम द आउटसाइड. मतलब दोनों साइड कोई ना कोई एक्टिविटी तो हो रही है. विद एवरी एक्शन जो भी एक्शन करेंगे उसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन आएगा ही आएगा. दिस इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. सो एफ ए बी, अगर ए बी पे लगा रहा है फोर्स तो बी भी ए पे लगा रहा है, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस indicates the directions are opposite. F A B is equal to minus F B U. F A B m1 v1 minus m1 u1 divided by time, that we have written. Afterwards that equations we put, that t will get cancelled by t, and afterwards we have just solved the equation m1 v1 minus m1 u1 m2 v2, and that is m2 u2. m1 that is m1 u1 plus m2 u2, that is the initial case for ball A and that is for ball B. Mean that was our initial momentum m1 u1 and m2 u2, initial momentum, and that is our final momentum. कहने का क्या मतलब है, मोमेंटम क्या रहा, कंजर्व रहा. both the equations are getting equal. Initial momentum and final momentum means before collision and after collision momentum क्या है, that is momentum before collision, that is momentum after collision. Momentum is conserved, it is not getting changed. Conserve का मतलब है same रहना. So hope this concept and derivation is understood by you. In the next video session we will do some numericals regarding this topic, and now it is your duty to do all these expressions, diagram, definitions on your notebook. Personally I will check your notebooks. If any doubt or query will be there, that also will be clear in the Zoom video session, because इसके बाद हम Zoom video session conduct करेंगे, उसमें आपकी सारी problems और doubts clear करेंगे. But firstly it is your duty to do all these things on your notebook. I will check personally of each and every student's notebook. You have to. Thank you. Have a nice day.